Okay, hello everyone. So today we are going to start React. If we talk about React, so React is the most widely used front-end library nowadays. So we will cover most of the things in the React. First of all, we will see how to start or create a new project in React. This is the very basic step and very important step in the React, how to set up your project. Project means there are a lot of segments, there are a lot of directories which support and help to develop a big application. So how to start a project? This is the one very important thing. And secondly, how to start your created application. Okay. So step by step, we will see all the points. Don't worry. If you don't know anything about the React, so this is a very good informative video for you all. Okay. So first of all, for managing the data, I want to create a folder inside the D directory, D drive. Okay, 1 second. Let me zoom so you can better understand. Now I think the screen is more visible. So I'm creating a folder. Okay, just a moment. Okay, it can be of any name. So I'm taking a React project. All right, my basically a folder is created. Now, what are the things required? Okay, 1 minute. I'm taking a list. The number one things, suppose you want to start work in the React. The first things you must have VS Code editor. Okay. This is a very important IDE, integrated development learning environment, integrated development environment for writing the code related to the React. So React के codes लिखने के लिए it provides the best platform or an editor. Okay. Second thing, Node.js must be installed in your system. In this video, I'm not covering the installation part of the Node.js. That I will provide a separate lecture. It is my assumption, मैं ऐसा assume करके चल रहा हूँ कि Node.js is already installed in your machine. But if you don't have installation, no problem. Just 1 second. There is an official site. There is an official site. Just 1 second. Okay. Node.js. You just simply type Node.js, and Node.js is the official site you can download. So I personally recommend to you just to go with this version 18.12.1 LTS. You just download it and then install. It's a very simple procedure. Normally जैसे हम other installation करते हैं वैसे ही इसका installation भी होगा. You have to simply click on this and it will start the downloading. Just keep. No problem. In the few seconds, it will be downloaded, and after that, you can start the installation process. It depends upon your internet speed, but it will be installed in the few minutes. Lot of approval screen will come. You just have to bypass. Okay. And after downloading and installing, you are completely ready for starting the React application. Okay. Now, 1 second. Now we have to open the node. After downloading and installing the Node.js, now we have to open the Visual Studio Code, and the short form is VS Code. इसे हमें ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद अभी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम था React project. We have to open that folder here. Just simply click on the open folder, and we have to search that folder, React project, and select the folder. It's a one-time process. Every day, you are not supposed to do the same work. Okay, fine. Just click on this. Okay. Now it's a blank project.
In this project, I want to create a React application. So first of all, we have to go to the terminal and click on new terminal. Okay. Now, this is a PowerShell where we type some command related to starting the application. Hope you understand. Okay. This much you understand. Just 1 second. So currently we are in our folder that's the name is React project. तो इस टाइम पर हम अपने React project folder के अंदर हैं. So I want to discuss two very important commands. One is npx, the another one is npm. Okay, these two commands are very important for set up the project in the React. What is npx? The full form of the npx is node package execute. Okay, node package execute is basically a command. It will download. It will directly. It doesn't download. Sorry, it directly execute all the packages. It directly execute all the packages which are essential for creating the React application. I am repeating my statement. It will installed from the internet all the packages which are essential for creating a React application. एक React application को create करने के लिए जितने भी important packages हैं, they are located stored in the internet repositories. So node package execute fetch that important packages and download in your machine. Without downloading it directly execute. This is the main thing. And npm first download and store in your local machine, then it start the installation. So these are the two different. Sometimes we use npx and sometimes we use npm. Both are not alternative to each other. Both are important. When we see there are some heavy packages and it will take to download first in the current machine, then it will install, we go with npx. हम वहां पर npx को प्रेफर करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा heavy packages. Heavy packages take lot of space in our current machine. So we directly install that packages without downloading. And sometime when small applications are there, we download and run. Okay, no problem. So first of all, I will go with npx. You don't worry. Just type npx. And after that, you have to write create React app. And after that, you have to provide a suitable, meaningful name of your application. So I am giving Wise Recognition. Wise Recognition. This is my application I am going to prepare in the React. Okay, fine. Simply we have to click on enter. Now we have to some patience because it will take few or couple of minutes. Okay, it might takes a couple of minutes. It depends upon your internet speed, but in few minutes your application will be set up. Okay, so this is my personal suggestion. You just pause my video and parallelly start this work. So when my work will be completed to start the application, then your work will also be completed parallelly. Okay, fine. A lot of messages will come. We cannot do anything in this. In the meantime, I just minimize it and going to the Bootstrap. Okay, for user interface setup, I want to include some Bootstrap environment also. Just 1 second. Bootstrap. Okay, it's the official site of the Bootstrap. Go to the documents. Okay, then go to the contents. There are a lot of contents are there in the Bootstrap. 1 second, let me go to the introduction part. Yeah. So these two files are very important.
as a CDN. Okay? These are the CDN links. Now you can attach this CDN link in your current project. Fine. And then your project will be in the support and touch of Bootstrap. One second. Okay, this complete file is very important. Just copy this file. Just copy this content and pasting here. Okay. Now you can just copy link from here. Okay, this is very important file, and just paste below. And secondly, you just take a script. Rest of the things you can remove. It is important, but in this stage, it is not required. So I just want to delete it. Okay. Now these two files are very important. It will be work as a CDN. Now we can attach. If we attach these two files in our current React application, then our application will become in the touch or contact of Bootstrap. Just 1 minute. 1 second. Let me check the status of our application. It is still installing. Okay. Now what other we can do? Not other thing what we can do right now. Right now I cannot do anything. ठीक है, we have to wait. हमें वेट करना ही होगा जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता. After completing this procedure, then we can do something. Okay, so we can see this is a confirmation message. Okay, happy hacking means your application is installed. All the packages are installed and your application is created. Now currently we are in a React project and our first application name is Wise Recognition. So we have to take an entry inside the Wise Recognition so we can start our application. So simple, we have to type CD. Okay, let me clear the screen. Now CD. And then we have to type Wise. No need to type the full name of the application. Just type the few word and then press the tab. Okay. Now currently we are in Wise Recognition application. We are currently in the React project, and inside the React project, Wise Recognition application folder. So right now we are in the Wise Recognition application folder. Now we can start our application. npm start, simple, and click on OK. This is the command. We can start our application. Whenever we start the application, we use the npm. This is the preferred command. Okay, fine. Wait, the application is starting. It will take few seconds. It provides the deployment server. This deployment server is from React side. Now, in the few seconds, we have to see the welcome screen of the React. Just 1 second. The application is coming on screen. Now see, this is my welcome screen of the React application. Means we have started successfully one React application. हमने एक React application को successfully start कर लिया. Now what is the next step? अब हमें इस एप्लीकेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है. तो उस मैनिपुलेशन के लिए we have to move in the src folder. This is the src folder and there are a lot of files in the src. Okay. Now what are the important files on which we have to start the work? app.js. This is very important file. All the work we have to do in this file only. It will be directly render on the screen. जो कुछ हम यहाँ पे करेंगे वो हमारी स्क्रीन पर डायरेक्टली शो होगा, विजिबल होगा और रेंडर होगा. इस react.js को app.js सपोर्ट करती है. ये प्रोवाइड करती है एक CSS सपोर्ट टू app.js. मतलब app.js में जितना भी CSS से रिलेटेड वर्क होगा वो सारा वर्क हमारा app.css में होगा.
तो हम चाहें, इट डिपेंड्स अपॉन अस कि we can use this app.css in our app.js as a CSS support, or we can create our own CSS file and include in this app.js. Not an issue. So just a moment. Okay, these are the predefined codes. So first of all, we have to remove all these predefined codes. Just a moment. Click on app.js. Okay. Now from the diff section, you can remove all the codes. Okay, fine. Now just save it. Now there is no code. Now we can write the code according to our requirement and need. बट यहाँ पर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर हम कोड लिखते हैं तो कोड में अगर हम जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सचर और कॉम्बिनेशन चाहते हैं, मतलब some code related to HTML and some code related to JS means JavaScript. So we have to use JSX. JSX क्या है? It provides the mixing environment. So we can write HTML code and JavaScript code together. So how to create the JSS segment? Just type this. This is called a JSX fragment. Now I am writing H2. We have started a React application. Not an issue. We have started a React application. Just save it और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपका आ जाएगा. Correct? Okay, we have started a React application. One second. Just a moment. Now, immediate reflection will be there. Okay. अब अगर हम इसमें बूटस्ट्रैप इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप के लिए हमने ये दो फाइल्स ऑलरेडी पहले से बना रखी हैं. इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे कहां प्लेस करना है ताकि इसका इफेक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे रहे. तो इसको पेस्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे पब्लिक में और इनसाइड पब्लिक देयर इज अ index.html. Okay, in the head section we have to simply paste these files. Okay, not an issue. अब आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं. यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है. जो हम app.js में लिखते हैं वो डायरेक्टली स्क्रीन पर रेंडर नहीं होता. वो इस पेज पे आता है HTML के और इस पेज पे आने के बाद स्क्रीन पर रेंडर होता है. तो ये जो फाइल है जिसका नाम है app.js, it is not directly rendering or appearing on the screen. First of all, the control will come to the index.html. The name of the index.html, this is the first file will be executed on browser. So app.js divert the control to the index.html, then your output will be appear on the screen. Now hope you understand the life cycle. Just a moment. Magnification is very high. I just want to close it. Okay. Now अब हम app.js में जाते हैं. वर्किंग हम सारी यहां करेंगे, बट ये वर्किंग जो हमारी पूरी है वो कॉलिब्रेट होकर index.html के साथ तब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी. नाउ आई वांट टू क्रिएट a div and class is equal to not class. We have to understand some changes. If we are working in the JSX, तो class is equal to नहीं, हमें लिखना होगा class name is equal to container. Understand? Now just cut it and pasting here. Perfect. अब कंटेनर क्या है सर? कंटेनर इज अ क्लास इन द बूटस्ट्रैप. हम ये देखना चाहते हैं कि अब बूटस्ट्रैप एनवायरनमेंट और सपोर्ट हमारी एप्लीकेशन में आना स्टार्ट हो गया. ओके, आई थिंक आ गया. बिकॉज माय स्टेटमेंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट.
इसका मतलब है जो हमारा कंटेनर होता है, कंटेनर क्लास ऑफ द बूटस्ट्रैप, ये साइड से मार्जिन ड्रॉप करता है एंड इट इज ड्रॉपिंग। तो अब हम कुछ और लिखना चाहते हैं, लाइक आई वांट टू क्रिएट अ बटन, class name is equal to btn success. This is a button creation in the bootstrap, or here I am writing processing. Just a moment. Now this is a bootstrap. This is a bootstrap button. Bootstrap button is very much closed. Okay. Why it is closed? Okay. Just a moment, because I have written outside the div container. हमने container div के बाहर इसे लिख दिया, इस वजह से ये edges से बहुत ज्यादा close हो गया, तो इसे कट करके हमें अंदर लिखना है. Clear? Okay. Now I just want to save it. Now the button will become properly. Okay, fine. अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो कोई एक मैसेज डिस्प्ले हो. तो उसके लिए कोई मैसेज अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, तो उसके लिए रिटर्न के ऊपर ये वो एरिया है जहां पर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन. तो आई एम क्रिएटिंग वन जावास्क्रिप्ट फंक्शन टेस्ट. Okay, fine. And here I am just displaying a message, alert message. How are you? We all are ready. Okay. And put a semicolon. It's optional. Now this is a function and I want to call this function on the click. So what we have to do? On click is an event. On click is an event. So we have to use a camel case. Okay. And in this camel case, on click is equal to open curly braces and closing curly braces. This is basically a JSX attribute. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट, और जैसे ही हम टेस्ट लिखेंगे तो इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये टेस्ट फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है वो कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद एक अलर्ट मैसेज हमें डिस्प्ले होना चाहिए. जस्ट अ मोमेंट, आई एम clicking and the message is coming. A small React initiative application. I have initiated the React. So I have developed a small application. Okay. Now, what are the second thing? This is a good practice. This is a good practice that we are writing the code inside app.js. But this is not a very good practice. हम अपनी app.js को बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनाते फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली मैंडेटरी स्टेप्स क्या हैं कि हम एक कंपोनेंट बनाएं और उस कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीजें लिखें और उस कंपोनेंट को हम इसके अंदर इंडेक्ट करें. तो कंपोनेंट कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको बताता हूं. कंपोनेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इनसाइड जेएस. तो जस्ट अ मोमेंट, इसके लिए हम जाएंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाने के बाद SRC, just a moment, clear. And in SRC, I am doing the right click and create a new folder in the SRC segment. और नाम आप यहां पर दे दिए component. आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, it doesn't matter. But हमने component दे दिया because we are going to create a component. Enter, press enter. Now, right click and new file. ठीक है, हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं. दिस फाइल विल बी ट्रीटेड एज कंपोनेंट. कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो फाइल हम बनाते हैं उसे हम लोग कंपोनेंट फाइल कहते हैं. ठीक है, तो अब फाइल बनाने के लिए फाइल का एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए. तो हमने कहा दिस इज, एज पर नेमिंग कन्वेंशन जो भी आप कंपोनेंट फाइल बनाएं उसका इनिशियल कैपिटल होना चाहिए. तो हमने यहां पर दिया फर्स्ट कंपोनेंट, और हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है वो JSX फाइल बने. JSX मतलब इसके अंदर हम HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे. ओके, अब ये हमारी फाइल बन गई. अब फाइल बनने के बाद जैसा कि हम फंक्शन कहीं पर क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं,
तो फंक्शन एक रीयूजेबिलिटी को शो करता है। इसी तरह से जो हमारी कंपोनेंट फाइल है वो भी एक रीयूजेबिलिटी के लिए यूज की जाती है कि हम यहाँ पर एक कंपोनेंट फाइल बनाएंगे और उसको हम अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या है बेसिकली कि हमें एक यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट बनाना। एक नॉर्मल कंपोनेंट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे तो ही ये कहीं पर यूज हो सकता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट एक तरह का फंक्शन ही होता है, जो कि यूजर डिफाइन फंक्शन की तरह हमने और लैंग्वेजेस में पढ़ा है। बट यहां पर उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड नाम दे दिया गया है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो हम यहां लिखते हैं आरएफसी। आरएफसी का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो बस आरएफसी देकर हम एंटर करेंगे। हो सकता है कि आप आरएफसी दें और ये कोड ना आए। उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है ECS7, जो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट और प्री डिफाइंड कोड्स प्रोवाइड करता है। तो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द इंस्टॉल्ड। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, दिस इज योर एक्सटेंशन आइकन। तो यहां पर जाने के बाद आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? ओके। थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन आप ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ओके, ये भी आपको कुछ प्रीडिफाइंड कोड्स प्रोवाइड करता है स्मार्ट कोडिंग के लिए। क्लोज इट। ओके, नाउ इट्स फाइन। अब हम यहां पर जो कोड हमने वहां लिखा था, अ हैवी कोड इज देयर, उसे हम यहां लाएंगे। कैसे लाएंगे? जस्ट आई वांट टू कट दिस। हमने पहले रिटर्न के अंदर का कोड कट किया और कट करने के बाद हमने इसे रिटर्न के अंदर पेस्ट कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब उसके बाद हम app.js में जाएंगे और फंक्शन ऐप के नीचे जो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया उसे भी हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर, 1 सेकेंड, रिएक्ट सॉरी रिटर्न के ऊपर यहां पर इस जगह पर हम इसे पेस्ट कर। अब जो काम हम वहां पे कर रहे थे वो काम हम अब कर रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर। क्लियर? अब इसको हमने सेव कर लिया और सेव करने के बाद एक बार हम अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं कि हाउ द एप्लीकेशन इज अपीयरिंग। इट्स अ ब्लैंक एप्लीकेशन। मतलब जो कंपोनेंट आपने बनाया है उसे आपको करंट पेज के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। विदाउट इंक्लूड और इंपोर्ट वो कंपोनेंट वहां से आपके करंट एप्लीकेशन में नहीं शो होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? अ वेरी स्मॉल स्टेप, इंपोर्ट, एंड यू हैव टू राइट डाउन योर कंपोनेंट नेम। तो मेरा कंपोनेंट नेम था फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहां पे लिखो फर्स्ट कंपोनेंट और ये अपने आप पूरी लाइन आ गई। और अगर ये लाइन नहीं आती है तो डोंट वरी, इंपोर्ट फर्स्ट, आप टाइप कर लो component, first component from single inverted comma dot slash. Maybe most of the people are watching this video without installing and set up the extension. So component folder, and inside component folder first component is there. ये हमने से इंपोर्ट कर लिया, बट इंपोर्ट करने के बाद भी हमें कुछ नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंपोर्ट करने से हमारा वर्क नहीं होगा, हमें कुछ और एडिशनल करना होगा। वो ये कि इंपोर्ट करने के बाद अब आप उस कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने के लिए जस्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड फर्स्ट कंपोनेंट एंड स्लैश। इसका मतलब है जो कोड आपने फर्स्ट कंपोनेंट में किया है वो पूरा कोड यहां पर इंडक्ट हो जाएगा। कितने पोर्शन में? I am telling you one thing. In this portion, all the code will be inducted or included or integrated. Now, let me check. Just I am flipping the screen, Alt Tab. Now, absolutely fine. तो जो कोड
हमने वहां पर किया था, not is working fine, absolutely fine. So what we have done, we have created an application in the React. We have executed the created application in the React. Then we have understood the app.js, index.html, and we have done the proper manipulation in the app.js. And after that, we have created the component, and how to use that component in the current project we have seen. Secondly, we have also seen the integration of the Bootstrap files in our current project. Okay, I think this is sufficient for this lecture. Okay, and you are watching the Anish Sir's Technology. 1 second. So this is sufficient. If you have any query regarding the installation process, understanding the concept, you just do me a comment and I will provide the solution as soon as possible. Thank you. Thanks to all of you.